Good afternoon, people. We'll start with social change, and this is most probably, I think, the topic in your section C, which talks about mixed planning, constitution and change, law and social change. With that, we'll include the topic of development. Then there is a topic in your section C, which talks about crisis of development. So basically, today, tomorrow, day after, I think day after, yes. So we'll try to finish the section C completely, ठीक है? And every year you get a question on this. कौन सा पूछेंगे ये नहीं बता सकती, but every year you will get the question. So social change is defined as a process which involves significant alteration with respect to behavioral pattern, customary norms and values, social structures, hence it says change is universal, change is continuous, it is inevitable. Change is law of nature. Remember the definition. What is change? Change is a process which involves significant alteration with respect to the behavioral pattern. It involves change in customary norms and values as well as social structure. Change is the only constant. Change is bound to happen in any society. Change is something which is continuous, inevitable, and universal. That is why change is referred as a law of nature. Then it says there can be different types of social change. For example, it could be of the type that is evolution. It could be structural change. It could be growth, and it could be progress. So there can be different types or dimensions of social change. For example, evolution, structural change, growth, and progress. If you look at these types of changes, see, evolution is something which is slow. Evolution is something which is gradual. Evolution is something in which the change is with respect to both size and structure. For example, Auguste Comte's three-stage evolution of society. What were those three stages? Theological, metaphysical, positive. So this is nothing but an example of evolution, where the size and the structure of the society both are undergoing a change. For example, in theological, the people believe in this stage in God or supernatural powers. In metaphysical, the belief is with respect to abstract ideas or philosophical conditioning. Similarly, in positive, you believe in reasoning, logic, science. So that is nothing but positive stage. So over a period of time, this change has been very slow. This has been very gradual. And here, both the size and the structure of the society has underwent a change. So this is a type of change which is known as evolution. Is that clear? Then you have structure. In structural change, as it suggests, only the structure is changing. So the old structures are getting replaced
by new structures. For example, nuclear family replacing joint families, or traditional agricultural society is now being replaced by modern industrial society. So this time the change has been structural. So the change could be evolution, it could be structural, it could be growth, it could be progress. So structural change में the old structures are getting replaced by the new structures. यहाँ तक clear हुआ? ग्रोथ में क्या होगा? एवोल्यूशन में साइज एंड स्ट्रक्चर बोथ गेटिंग चेंज्ड. स्ट्रक्चरल चेंज में द स्ट्रक्चर्स आर गेटिंग चेंज. तो ग्रोथ में व्हाट इज चेंजिंग? नहीं, दैट्स प्रोग्रेस. ग्रोथ इज ओनली द चेंज इन द साइज. Growth does not guarantee that it will bring about development on social justice or not. It could be a kind of growth where overall your GDP is increasing, but the relative poverty is also increasing. ठीक है ना? So growth is with respect to increase in the size. That is quantum increase, the quantity wise change. For example, overall population growth, urbanization growth, similarly GDP growth. जब हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सबको दिख रहा है ना क्या लिख रहे हैं? मुझे भी लग रहा है. कहाँ थे हम? इंक्रीज इन द साइज. तो जब हमने अर्बनाइजेशन पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, आई सेड अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच पॉपुलेशन मूव्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया. सो इट इज अ क्वांटम इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज. सो दैट इज नथिंग बट ग्रोथ. ठीक है. देन लास्ट लिखो प्रोग्रेस. राइट डाउन द प्रोग्रेस. Change in desirable direction. Change in desirable direction. That is progress. It is not just change. It is change which is desirable. For example, infrastructural growth or infrastructural progress with respect to health, skill, and education. So change in desirable direction. So these are nothing but different types of change. Now what we have discussed so far, what is social change? How change is the only constant, and there can be different manifestations of change. For example, evolution, growth, progress, or structural change. इसका मतलब है these terms are not supposed to be used मतलब synonymously. You should know what is the difference. अभी थोड़ी देर में हम करेंगे एक concept modernization. फिर हम करेंगे development. That how these terms are also different from
change. You cannot use it synonymously. Is that clear? अब मुझे ये बताओ, आपने fact और value पढ़ा है ना पेपर 1 में? तो is social change a fact or social change is a value? Raise hand and tell me. Is it a fact, it's value, it's both? What is a fact? Social fact नहीं, generally fact. हाँ हाँ ठीक है. Something which is verifiable, something which can be verified based on observation or data. Something which is a given thing, which is not being assumed or presumed. So social change is a fact. For example, aren't we observing change? Family has changed, marriage has changed, role of religion has changed, economy has changed, Jajmani system has changed, mutual interdependence has changed based on caste-based occupational division of labor. So change is a fact. But at the same time, change is a value also. Value means something which is prescriptive or normative, which you desire. For example, a marginalized section will always desire a social change. Marxism क्या कहेगा? Revolution आए जिसकी वजह से क्लासलेस सोसाइटी बने. फेमिनिज्म क्या कहेगा? जेंडर इक्वालिटी आए तभी द सोसाइटी वुड बी इक्विटेबल एंड विल इंश्योर जस्टिस. आंट दे बोथ लुकिंग फॉर अ चेंज? लेकिन अगर फंक्शनलिस्ट होगा तो वो क्या कहेगा? चेंज होना चाहिए. अरे गजब ही कर दिए यार. फंक्शनलिस्ट भी तो कहेगा कि चेंज होना चाहिए, लेकिन सडन अब्रप्ट नहीं होना चाहिए. इस तरह से चेंज होना चाहिए कि इट शुड बी इंटीग्रेटिव इन नेचर. चेंज इज बाउंड टू हैपन, बट फंक्शनलिस्ट कहेंगे कि सडन अब्रप्ट चेंज नहीं हो, इट हैज टू बी इंटीग्रेटिव सो दैट ओवरऑल सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड. Is that very clear? So this is nothing but value and fact. अब बनाओ, लिखो. Social change as a fact and value. ऐसे social change लिखना. एक तरफ लिखो fact और दूसरी तरफ लिखो value. और फैक्ट में लिखो इट इज वेरीफाइबल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड डेटा. दैट इज वाई चेंज इज अ फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वी आर मूविंग फ्रॉम सिंपल सोसाइटी टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. देखो चेंज हुआ. जब हम लोग फैमिली पढ़ रहे थे तब हमने कहा था ना कि फैमिली इनिशियली वॉज अ प्रोडक्शन यूनिट, बट नाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंजम्पशन यूनिट. सी, इट हैज अंडरवेंट अ चेंज. पहले क्या था? स्ट्रॉन्ग रिलीजियस ओरिएंटेशन. और अब क्या देखने को मिल रहा है? सेक्युलराइजेशन. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, अभी मैनेज में रीड आउट कर देती हूं. इट इज वेरीफाइबल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड डेटा. एग्जाम्पल, सिंपल सोसाइटी टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. Family initially was a production unit but has transformed into consumption unit. Strong religious orientation. And now what we observe is secularization. थोड़ी देर में आप ये भी लिख सकते हो कि in between there was secularization but now it is religious revivalism. So the change is the constant thing. So it's a fact. दिख रहा है change हो रहा है. लेकिन value is something ought to be.
something which is prescriptive or normative. For example, marginalized sections having desire for change, such as according to Marxism, there is a desire for revolutionary change to establish classless society. Similarly, feminism, there is a desire for change to establish gender equality. I'll read out if something. Value में मैंने लिखवाया है कि something which is ought to be, something which is prescriptive or normative. For example, marginalized sections having a desire for change. If I apply the philosophies या theoretical strands, Marxism says there is a desire for revolutionary change to establish classless society. And feminism, there is desire for change to establish gender equality. So change is both a fact as well as a value. Same could I say about continuity also? Is continuity a fact? Is continuity a fact? Caste has not totally been transformed. Family has not totally been transformed. Marriage, religion, economy has not totally been transformed. Some element of traditional aspects are still continuing. So continuity is a fact. But is continuity a value? Functionalist से पूछो, वो तो कहेंगे it is a वैल्यू, क्योंकि थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है. नहीं तो रिमेंबर हमने एक कॉन्सेप्ट किया था मार्जिनल मैन. यू विल बी अपरूटेड फ्रॉम योर ट्रेडिशंस, you will be in a situation of no man's land. The cohesiveness will be disrupted. So a slight amount of continuity is always required. So continuity also as social change is both a fact and a value. ये एक लाइन में लिख लेना. इसको लिखो. Similarly, continuity is both a fact and value. Similarly, continuity is both a fact and value. For example, society never completely abandons its past. Society never completely abandons its past. Remnants of the past always survive. Remnants of the past always survive. For example, rituals, just a sec. Rituals, festivals, kinship norms, etc. Rituals, festivals, kinship norms, etc. नेक्स्ट इसी में लिखो. अभी तो हमने कंटिन्यूटी इज अ फैक्ट लिखा है. नेक्स्ट लाइन लिखो.
society also prefers evolutionary change. Society also prefers evolutionary change over abrupt change. In fact, functionalism emphasizes over continuity for social order. I'm giving you 2 minutes. Quickly read this fact and value and tell me, did you understand what I'm trying to say? देखो, एक सिंपल सी बात है, कोई तुमसे नहीं पूछ रहा कि सोशल चेंज फैक्ट है या वैल्यू, बट अगर सोशल चेंज पे सवाल आता है, देन यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट सोशल चेंज इज बाउंड टू हैपन. दैट इज व्हाई इट इज अ गिवन fact, and if that social change happens in the desirable direction, it becomes a value. Is it making sense for everyone? ठीक है, इतना लिखा सबने, पढ़ा, क्लियर हुआ हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है. और कभी भी कोई क्वेश्चन सोशल चेंज पे आएगा, यू विल ऑलवेज एड अ पॉइंट. देखो यार, कुछ चीजें हैं, आई थिंक किसी ने मुझसे बोला भी था कि एक क्लास में वो कीवर्ड्स बताने के लिए. एक चीज हमेशा समझना, अगर तो आ जाए एक्सप्लेन, अगर कीवर्ड हो इलैबोरेट, तब ना काउंटर आर्ग्यूमेंट डज नॉट मैटर. फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन हाउ एजुकेशन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज. यहां पे एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इफ सोशल चेंज इज अ फैक्ट, कंटिन्यूटी इज ऑल्सो अ फैक्ट. इज दैट क्लियर? तो आपको यह बताना पड़ेगा कि नॉट ऑलवेज एजुकेशन लीड्स टू सोशल चेंज. एंड इफ आई अप्लाई पीर बुर्दुएस कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ डोमिनेंट कल्चर, या फिर लुई अल्थूजर्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, then it is the same education which helps in reproducing the dominant culture in the society. Is that very clear? ठीक है. वैसे ही elaborate होता है. elaborate का मतलब होता है जो स्टेटमेंट दे रखा है उसे बस elaborate कर दो, काउंटर व्यू देने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर सवाल सोशल चेंज पे आएगा तो आपको देना पड़ेगा, because if social change is a fact, continuity is also a fact. Is it making sense for everyone? समझ आया यहां तक? ठीक है. नेक्स्ट डालेंगे एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज. हाँ, कह सकते हैं. वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग फैक्ट इज ऑब्जेक्टिव वेयर एज वैल्यू इज सब्जेक्ट. एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज. एक्चुअली अब एक मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो, एक तरफ एजेंट्स लिख सकते हो, एक तरफ एग्जाम्पल लिख सकते हो. ठीक है. तो पहला एजेंट लिखो. इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, उसका रीजन है, आगे डिटेल में करवाऊंगी. अभी सिर्फ समझा रही हूं कि कितने एजेंट्स हो सकते हैं. पहला एजेंट लिखो, न्यू आइडियाज. यार अविनाश एक काम कर, न्यू आइडियाज. पहला एजेंट लिखो, न्यू आइडियाज. उसका एग्जाम्पल डालो. फॉर एग्जाम्पल, मैक्स वेबर्स प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. यही था कि पहली बार पता चला प्रोटेस्टेंट एथिक्स के आइडियाज थे विच लेड टू द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. सेकेंड डालेंगे, एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एजुकेशन साइंस एंड, नेक्स्ट एजेंट, इसको डिटेल में अभी बाद में करेंगे. एजुकेशन कॉमा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंट है ये. एग्जाम्पल में लिखो, स्प्रेड ऑफ रैशनलिज्म कॉमा डिजिटल लिटरेसी. स्प्रेड ऑफ रैशनलिज्म कॉमा डिजिटल लिटरेसी.
थर्ड, इंडिविजुअल मोरालिटी, एक्चुअली टॉपिक है इंडिविजुअल एफर्ट, बट मैं चाह रही थी इंडिविजुअल मोरालिटी लिख लें. इंडिविजुअल मोरालिटी, फॉर एग्जाम्पल सोशल रिफॉर्मर्स. सोशल रिफॉर्मर्स, अरे वो एक्चुअली अब जब सिलेबस खोल ही रहे हो तो पार्ट ए में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है ना, है ना, इसीलिए इंडिविजुअल मोरालिटी करते हैं. इंडिविजुअल मोरालिटी मतलब ऐसा हो सकता है ना, सोसाइटी में कोई प्रैक्टिस एग्जिस्ट कर रही हो, सती प्रथा कर रही है, चाइल्ड मैरिज कर रही है, विडो रीमैरिज पे बैन है, लेकिन कोई इंडिविजुअल है जिसकी मोरालिटी कह रही है दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट राइट, हेंस इट नीड्स टू अंडरगो अ चेंज. फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय, दैट क्रिएटेड ग्राउंड्स फॉर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सो दैट कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट change. So individual morality is an agent of social change. Next. Structural strain and relative deprivation. Structural strain and relative deprivation. नील जे स्मेल्सर की थ्योरी बताओ जल्दी से. Structural strain and relative deprivation. नील जे स्मेल्सर्स, हाँ, वैल्यू एडेड थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट. हाँ, कितने फैक्टर्स होते हैं? 6 फैक्टर्स. वेरी गुड, बताओ. ठीक है. हम्म. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, वेरी गुड. हाँ, आगे. फेलियर ऑफ स्टेट कंट्रोल. हाँ, एंड बात फैलाएंगे कैसे? मोबिलाइजेशन. So it all starts with the first thing is structural conduciveness. जैसे कि इसको बस एग्जाम्पल की तरह लेना, ठीक है. स्ट्रक्चरल कंड्यूसिव मतलब जैसे हमारी सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक, तो अगर आज करना नहीं, मैं एक बात बता रही हूं, अगर आज आप प्रोटेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है. चलो अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूं, वो थोड़ा और बेटर लगेगा. यूएस इज डेमोक्रेटिक, तो अगर वहां के लोग प्रोटेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं. ऐसे 8 मिलियन लोग सड़कों पे उतर सकते हैं एंड दे कैन डिमांड दैट द प्रेसिडेंट नीड्स टू रिजाइन या इंपीच कर दो, ठीक है. तो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस. दूसरा कहता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में गैप होने का बहुत जरूरत है. अब जब ये प्रेसिडेंट दोबारा आए थे, इनको लाया ही इसलिए गया था, इन्होंने बोला था मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन. इन्होंने बोला था ऑल योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वुड बी रिजॉल्व्ड, एंड ही आल्सो डिमांडेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस. आयरॉनिकली, क्योंकि उन्होंने यही कहा था दैट आई विल एस्टैब्लिश पीस इन द ग्लोबल ऑर्डर. तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में गैप था, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन क्रिएट हो गया. अब एक जनरलाइज बिलीफ फैल गया है, 2-4 लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं. देयर आर मेनी हु आर बिलीविंग कि जो इस वक्त ग्लोबल सिनेरियो आया है क्राइसिस का, दैट हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ओवर एम्बिशियस एटीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर लीडर. सो देयर हैज बीन अ जनरलाइज्ड बिलीफ. फिर आ गया एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, दैट इज ईरान इजराइल वॉर. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का मतलब होता है इमीडिएट फैक्टर. फिर जो 5वां है मोबिलाइजेशन. अब आपको कैसे पता कि इतने लोग सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे देखा ना आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह वीडियोस है. सो दिस इज मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस. और अगर यहां पर अब लास्ट स्टेज अभी आनी बाकी है कि वेदर द स्टेट वुड बी एबल टू कंट्रोल देम और नॉट. बाय चांस अगर गलती से स्टेट ने वायलेंट मीन्स अडॉप्ट कर लिए टू सप्रेस दिस मूवमेंट, तो सिर्फ वहां के लोगों को नहीं, वर्ल्ड ओवर द सपोर्ट वुड बी प्रोवाइडेड टू दोस पीपल. So that is failure of state control. So Neil J. Smelser's value added model behind social movement. अब इसमें लगाना आप जेंजी क्राइसिस जो नेपाल में हुई थी, जो बांग्लादेश में हुई थी, तभी मुझे नील जे स्मेल्सर का ये वैल्यू एडेड मॉडल बहुत अच्छा लगता है. ये हर जगह अप्लाई होता है. This model has lot of application. So try to apply this model. Is that clear? For example, Neil J. Smelser value added model for social movement.
नीलजे स्मेल्सर, ये किया है ना आप लोगों ने, याद नहीं आ रहा ना, बस किया तो है ना, तो लिखवाने की तो जरूरत नहीं है ना मुझे। तो पॉइंटर्स लिखवा दूं, मतलब वो 6 पॉइंट्स बता दूं जो हैं, हाँ तो लिख लो, ऐसे संकोच नहीं करो। बैठ के तो मैं बोल ही सकती हूँ, मुंह में बस मेरे कोई तकलीफ नहीं है, उसके अलावा बॉडी के हर पार्ट में तकलीफ है सिवाय मुंह के। तो लिख लो, वैल्यू एडेड मॉडल ऑफ नीलजे स्मेल्सर। लेती हूं 2 मिनट बाद, लेके बैठ जा। वैल्यू एडेड मॉडल ऑफ नीलजे स्मेल्सर, उसमें लिखो, इट हैज 6 फैक्टर्स, the model has 6 factors, model has 6 factors responsible for social movement, model has 6 factors responsible for social movement. First, structural conduciveness, structural conduciveness, और याद है ना हमने कैसे लिखते थे, KEE, दिस इज द कीवर्ड, कोलन डालो, एक्सप्लेनेशन लिखो एक लाइन में, सोसाइटी मस्ट अलाउ पीपल, सोसाइटी मस्ट अलाउ पीपल टू एक्सप्रेस इश्यूज, सोसाइटी मस्ट अलाउ पीपल टू एक्सप्रेस इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल, in a democratic country like India, people can protest. In a democratic country like India, people can protest. In a democratic country like India, people can protest. Structural conduciveness. अब दूसरा लिखो, structural strain. Structural strain. Structural strain. फिर इसका मतलब लिखो, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन कोलन डाल के लिखना, गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, फॉर एग्जाम्पल, youth expect job but faces unemployment, youth expects job but face unemployment. क्लियर है? तीसरा, generalized belief, generalized belief, अच्छा एक चीज ऐसी, जब पेपर 1 रिवाइज करोगे या कर रहे होगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं, देखो वो 6 थिंकर्स तो आप वैसे भी अच्छे से रिवाइज करते हो, एप्लीकेशन वगैरह सब पढ़ते हो, उस पे मैं नहीं आपको ज्ञान दे रही, लेकिन जो आपका वो टॉपिक नहीं है, जैसे रिलीजन का टॉपिक हो गया, या पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी वाला टॉपिक हो गया, या सोशल चेंज वाला टॉपिक हो गया, इसको जब जब पढ़ोगे तब उसका ना एप्लीकेशन तैयार कर लेना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आपने सोशल मूवमेंट पढ़ा तो आपने उसकी बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी, हर्बर्ट ब्लूमर की थ्योरी हो गई, मैकार्थी एंड ज़ाल्ड की पर्सपेक्टिव हो गया, नीलजे स्मेल्सर हो गया, तो जब इनकी थ्योरी या रेवोल्यूशन पढ़ रहे हो तो ब्रिंटन का पर्सपेक्टिव, जो भी आप कर रहे हो, आप इन सबका एप्लीकेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक एक तैयार करते जाना। इसके 2 फायदे, एक, जब आप एप्लीकेशन तैयार करोगे आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी, और दूसरा, अगर सोशियो पेपर 2 में पूछ लिया तो यू हैव अ थ्योरेटिकल बैकिंग टू आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक, हमने कितने पॉइंट्स लिखे? 2। तीसरा है जनरलाइज बिलीफ, इसमें लिखो, पीपल डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, पीपल डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, people develop common understanding of the problem. For example, students believe lack of government jobs is the main issue. Lack of government jobs is the main issue. Lack of government jobs is the main issue. अब चौथा पॉइंट लिखो, precipitating factor.
precipitating factor. For example, इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रही, इसका मतलब ही होता है ट्रिगरिंग मोमेंट. अब उसको क्या जबरदस्ती लिखना. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मतलब अ ट्रिगरिंग मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, पेपर लीक. वैसी जॉब नहीं है, ऊपर से खबर आ गई कि पेपर लीक हो गया, तो ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो गया, पेपर लीक. नेक्स्ट लिखो, मोबिलाइजेशन फॉर एक्शन. मोबिलाइजेशन, फिफ्थ पॉइंट है, मोबिलाइजेशन फॉर एक्शन. For example, students protesting through WhatsApp. Students protesting through WhatsApp, YouTube, Telegram, etc. And last, failure of social control. Failure of social control. Failure of social control. For example, failure of social control. For example, police crackdown. Police crackdown leads to police crackdown leads to more public support for protesters. Leads to more public support for protesters. अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये मॉडल इसी ऑर्डर में आता है. आप इसकी हेडिंग्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. पहले स्ट्रक्चर को कंड्यूसिव होने की जरूरत है, फिर स्ट्रेन आएगा, फिर जनरलाइज बिलीफ होगा, फिर कोई एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होगा, फिर मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस होंगे, एंड फाइनली फेलियर ऑफ स्टेट और सोशल कंट्रोल होगा. इसमें कोई भी पॉइंट इधर उधर नहीं हो सकता. दिस इज द ऑर्डर. Is that very clear? And the theory is with respect to social movement. World over जो भी social movement हुए हैं, आप उसको recent days में आप उसको अप्लाई करके देखो कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा. आप ये भी देख सकते हो कि जो बहुत मतलब लास्ट मूवमेंट जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज हुआ, जैसे फार्मर लॉ प्रोटेस्ट हो गया या मी टू मूवमेंट हो गया, क्या वो इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़े. ये बस बता दो, ये कौन से नंबर वाला एजेंट लिखा था हमने? फोर्थ. फिफ्थ लिखो, कल्चरल चेंज. कल्चरल चेंज. विलियम ऑकबर्न का एक पर्सपेक्टिव है ना कल्चरल चेंज को लेके. थ्रू इन्वेंशन, डिस्कवरी एंड डिफ्यूजन द चेंज इज बीइंग ब्रॉट अबाउट. आर वी अवेयर ऑफ इट? राइट डाउन. फॉर एग्जाम्पल, William Ogburn explains cultural changes mainly through three processes. Explains cultural changes mainly through three processes. First, invention. For example, क्रिएशन ऑफ मोबाइल फोन्स. ये इन्वेंशन था. जब कोई नई चीज बनती है, दैट इज इन्वेंशन. दूसरा लिखो, डिस्कवरी. डिस्कवरी. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग फोन्स फॉर डिजिटल पेमेंट्स. दोनों में फर्क समझ आया? फोन कोई नई चीज थी तो वो इन्वेंशन था, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था वो फोन था, लेकिन उसको आपने नई चीज के लिए यूज करा, दैट वाज डिजिटल पेमेंट. सो व्हेन यू आर यूजिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग फॉर समथिंग न्यू, दैट इज डिस्कवरी. और तीसरा लिखो, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल, everyone using mobile phones in villages. Everyone using mobile phones in villages. बना तो सिटी में था ना, स्प्रेड हुआ ना आइडिया. The culture got spread from one society to
another, whether it was urban to rural, or let us say developed countries to developing country, that is nothing but diffusion. अब एक चीज ध्यान रखना, वैल्यू एडेड मॉडल पे जाओ वापस. आपने देखा हमने एग्जाम्पल एक ही कॉन्टेक्स्ट में लिया है. हम फर्स्ट एग्जाम्पल से के लास्ट एग्जाम्पल तक स्टूडेंट को ही प्रोटेस्ट करा रहे. एग्जाम्पल डजंट चेंज. अब पलटो कल्चरल चेंज. हमने तीनों पॉइंट को यूज करने के लिए एग्जाम्पल सेम लिया, तभी तो समझ आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन, डिस्कवरी एंड डिफ्यूजन. तो एग्जाम्पल बदलेगा नहीं. इज इट वेरी क्लियर? अब आपको जब इसे रिवाइज करोगे तो आप अपनी तरफ से 2 और एग्जाम्पल डाल देना इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड. क्लियर है? ठीक. हाँ, 5th पॉइंट हो गया ना. 6th डालो. डेमोग्राफिक चेंजेस. डेमोग्राफिक चेंजेस. डेमोग्राफिक चेंजेस ये पढ़ चुके हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑल. फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन. हम रूरल अर्बन माइग्रेशन भी लिख सकते थे. अर्बनाइजेशन कॉमा डेमोग्राफिक डिविडेंड कॉमा लॉन्जिविटी डिविडेंड एक्सेट्रा. ये सब पढ़ चुके हैं. सो डेमोग्राफिक चेंजेस. नेक्स्ट लिखो एक्सटर्नल अग्रेशन और वॉर. अब इसको क्या ही बताऊं. वॉर किन्हीं 2 में हो रही है, रिफाइनरी कहीं की उड़ रही है, एलपीजी कहीं खत्म हो रही है. तो दैट इज इंपैक्ट एक्सटर्नल अग्रेशन और वॉर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल impact of war on standard of living. Impact of war on standard of living, access to resources, poverty, hunger, etc. Poverty, hunger, etc. लास्ट लिखेंगे चेंज बाय चांस. चेंज बाय चांस. फॉर एग्जाम्पल इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन वर्क कल्चर. इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन वर्क कल्चर. एक्चुअली इसको मर्टन का एग्जाम्पल ऑफ सेरेंडिपिटी में भी लगा सकते थे. COVID-19 ने कितनों का टैलेंट उभार दिया. कहां टिकटॉक से दुनिया शुरू हुई थी और आज यूट्यूब पे इतने फेमस व्लॉगर्स बने. दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. सो आई एम सेइंग दैट दिस चांस could be a positive change also, and this chance can bring about a negative change also. So is this very clear for everyone? ठीक है. अब इसमें एक पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे मॉरिस जिन्सबर्ग का. Morris Ginsburg. There are 3 major forces of change. Agent of change भी लिख सकते हो. There are 3 major forces of change. First, major forces of change according to Morris Ginsburg. First, acculturation. 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 इसको एक लाइन में लिखो. Adopting some elements. Acculturation का मतलब बता रही हूं. Adopting some elements of another culture. Adopting some elements of another culture while still keeping your own original culture. While still keeping your own original culture.
For example, glocalization, if you remember, global plus local. So glocalization. For example, ab likhna nahi, they say your dressing style has changed, your food habits have changed, but that does not mean you are no longer traditional. Jab aap wapas ghar jate ho, then you start behaving like as you were originally. So there is global plus local. That is nothing but acculturation. You adopt some element of the new culture, but you retain your own culture as well. Is that clear? ठीक है. Next लिखेंगे second. Charismatic leader. Personality लिख देते हैं. Leader से ज्यादा personality would be a better word. Charismatic personality. Charismatic personalities. For example, Dr. B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi, Honorable PM, नहीं करंट पीएम, फुल स्टॉप. थर्ड, planned social change. Planned social change. Planned social change. For example, 5-year plans. Planned social change मतलब बहुत ही directed change. So 5-year plans हो गया, land reforms हो गए, नीति आयोग, जी राम जी, अब एमजी नरेगा बोलने का इतना आदत हो गया, आप लोग जी राम जी लिख लो, जो भी मतलब जो भी नई पॉलिसी है, दैट इज अ वेरी प्लान्ड सोशल चेंज. ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? हमने वो अपलोड करवाया है क्या, जो मैंने डॉक्यूमेंट बोला था? करा है? एक सेकंड. हमने 2 बार एक ही कर दिया शायद, मतलब मैंने ही गलत भेज दिया क्या, मतलब मैं वही पूछ रही हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट. मैंने टीम को तो सही भेजा है, मैंने तुम्हें गलत भेज दिया शायद. तुमको भी ये ना दोनों सेम आ गए. एक वो एजेंट फॉर्मेट वाला जो नहीं था, एक जो जनरल फॉर्मेटिंग थी, वो चाहिए मुझे. ठीक है, चलो तब तक आगे बढ़ते, तब तक टीम लगा देगी. व्हाट आई हैव डन इज दैट, ये क्वेश्चन हर साल आता है, कोई भी आए, चाहे एजुकेशन एंड सोशल चेंज आ जाए, चाहे मीडिया एंड सोशल चेंज आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज आ जाए, जुडिशरी एंड सोशल चेंज आ जाए, कोई भी XYZ क्वेश्चन आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, आंसर लिखने का तरीका सेम रहेगा. तो मैंने एक फॉर्मेट बना दिया है कि अगर कभी भी सोशल चेंज पे सवाल आए, आप आंख बंद करके फॉर्मेट लगा देना, ये अप्लाई हो जाएगा. इज दैट क्लियर? मैं एक एग्जाम्पल देके बता देती हूँ. अभी मैं फॉर्मेट भी अपलोड करा दूंगी. देखो, अब जैसे क्वेश्चन है मास मीडिया एंड सोशल चेंज, इसको लिखने का तरीका ये होता है, यू स्टार्ट विद द डेफिनेशन. यहां पे टॉपिक क्या है? मास मीडिया. तो आप डेफिनेशन किसकी लिखोगे? मास मीडिया की. उसके साथ आपने थिंकर तैयार किए होंगे, क्योंकि पेपर 1 में मीडिया इज देयर, तो आपने कोई भी एक थिंकर की डेफिनेशन डाल दी. तो ये बन गया आपका इंट्रोडक्शन. What is mass media and one thinker's perspective is nothing but the introduction. अब आता है how mass media brings change. ये हेडिंग हमेशा सेम रहेगी. Either it initiate change or it fastens the process of ongoing change or it hinders the process of social change, and sometimes it is the social change which affects the agent.
मतलब सोशल चेंज अफेक्टिंग मास मीडिया, एंड फाइनली द कंक्लूजन। अब इसमें एजुकेशन डाल दो। व्हाट इज एजुकेशन? वन थिंकर्स पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, हाउ एजुकेशन इनिशिएट्स चेंज, how education fastens the process of change, how education hinders the process of change, and how education is affected by social change, and what is the conclusion. What is law, and one definition of law. How law initiates social change, how law fastens the process of social change, how law hinders the process of change. अब जैसे आ गया ना, ट्रांसजेंडर बिल को अमेंड कर दिया ना, चेंज अफेक्ट हुआ कि नहीं? कि पहले आप इतना प्रोग्रेसिव लॉ लेकर आए और अब आपने उन्हें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ही उनसे ले लिया. सो इन अ वे लॉ कैन ऑल्सो हिंडर द प्रोसेस ऑफ सोशल change. And then finally how law is getting affected by social change. जैसे राजा राम मोहन रॉय, पहले उन्होंने मूवमेंट लाए और तब जाके सती अबॉलिश हुआ. तो समटाइम्स इट इज द सोशल चेंज विच इंपैक्ट्स द लॉ. डिड यू गेट द पॉइंट? स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम. बट इसमें कंटेंट क्या लिखना है वो मैं ही दूंगी. मतलब आई विल गिव यू दीज डॉक्यूमेंट्स, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस कैन बी इजिली यूज्ड इन योर पेपर 1 ऑल्सो. अब इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज लगा दो. What is technology? One thinker's perspective. How it initiates, नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए. How it initiates, बस अपलोड करवा देना विनाश. How it initiates social change, how it is fastening the process of change, how it is restricting change, and how it is affected by change. So everything could be written like this. क्योंकि एक पेपर में तो एक ही सवाल आएगा ना. So the structure can be used. Is that very clear? By chance एक ही पेपर में 2 सवाल आ जाए तो आप दोनों नहीं लिखोगे. उसका रीजन है, दोनों केसेस में सोशल चेंज की तो आपने एक ही डेफिनेशन तैयार की होगी. तो ये ट्रैप्स होते हैं, इसमें फंसना नहीं है. अगर सोशल चेंज पे एक पेपर में 2 सवाल हैं तो मेक इट अ पॉइंट यू आर नॉट अटेम्प्टिंग बोथ द क्वेश्चन, बिकॉज नो मैटर हाउ डिफरेंट योर कंटेंट इज, देयर विल बी सम कंटेंट विच विल बी ओवरलैपिंग. तो एक टॉपिक से एक पेपर में एक ही सवाल करना है. इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? कैन आई प्रोसीड फ्रॉम हियर? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मॉडर्नाइजेशन. Within that, right, according to Wilbert Moore, according to Wilbert Moore, according to Wilbert Moore, modernization is defined as a complex process, of social change, as a complex process of social change from traditional society to technologically advanced and stable societies. Technologically advanced and stable societies. Full stop. नेक्स्ट लाइन करके लिखेंगे. Modernized societies are characterized by following attributes. Are characterized by following attributes. कॉमा डाल के लिखते जाना. Industrialization, urbanization, secularization, occupational differentiation, achievement orientation, bureaucratic institutions,
bureaucratic institutions, democratic principles, and individualism लिख दिया क्या? And individualism. And individualism. In case modernization पे question आए, you should know the characteristic attributes of a society which is modern. Is that clear? Next, give the heading development. It is a multi-dimensional concept. It is a multi-dimensional concept characterized by three aspects. Growth, transformation, modernization. Growth means quantum increase in production and consumption. Modernization, just now we studied, a shift from traditional society to technologically advanced plus stable society. And transformation here means social transformation, political change, economic and cultural change. So when all these three features comes together, then it is known as development. So can I define development is equal to growth plus transformation plus modernization? चेंज जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट हो. Development is one of the manifestation of change. So development, modernization, they are all types of social change. Change is not synonymous with development. Change may be undesirable also. Change may be such that there is no inclusion. Is that very clear for everyone? ठीक है. इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट. Development in essence is society's capacity to mobilize resources to meet challenges and opportunity. To meet challenges and opportunities. To meet challenges and opportunities. Full stop. Next. There are certain preconditions for development. There are certain preconditions for development.
there are certain preconditions for development. Pointers में लिखना. First, aspiration for advancement. Aspiration for advancement. आपके अंदर वो desire होनी चाहिए to overcome the challenges. So aspiration for advancement. Second, let us say you have the aspiration. Second, awareness about opportunities. Awareness about opportunities. Awareness about opportunities. Or last, surplus energy. सरप्लस एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू टेक रिस्क एंड परस्यू इनोवेशन. लिख लो अगर नाम से नहीं समझ आएगा तो. सरप्लस एनर्जी मतलब कैपेसिटी टू टेक रिस्क एंड परस्यू इनोवेशन. कैपेसिटी टू टेक रिस्क एंड परस्यू इनोवेशन. क्लियर है? ठीक. अब लिखेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट. डायरेक्ट सवाल बनता है. थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट. हाँ, किस पर्सपेक्टिव पे बनेगा ये नहीं कह सकती मैं. ठीक है. थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट. अच्छा, मुझे ये बताओ, हमने स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा है डेवलपमेंट पे? जब आपने डिपेंडेंसी थ्योरी, डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें आपने स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा है? अच्छा, ये बता देती हूँ. स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो कंट्रीज का अंडर डेवलपमेंट है, दैट इज नॉट नेचुरल. That underdevelopment of the countries have happened because of the structural inequalities which is existing in the system. तो इसलिए अगर आपको उस अंडर डेवलपमेंट को एड्रेस करना है तो स्टेट का इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है. यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट रिफॉर्म्स. मतलब आप फ्री मार्केट पे नहीं छोड़ सकते टू ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ग्लोबलाइज सिस्टम है ये इतना एक्सप्लॉइटेटिव है. यही तो डिपेंडेंसी थ्योरी है. एंड्रे गुंद्रे फ्रैंक की अगर मैं बात करूं या समीर अमीन के पर्सपेक्टिव की बात करूं, तो वो यही तो कह रहे हैं कि ये जो ग्लोबलाइज्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये इतना एक्सप्लॉइटेटिव है कि इफ सम कंट्री इज ग्रोइंग, दे आर ग्रोइंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्री. तो जिन कंट्रीज में अंडर डेवलपमेंट आ रहा है, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट. It is because of the kind of integration which has happened with the developed country. तभी तो समीर अमीन ने कहा था कि अगर ये अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का आपको डेवलपमेंट चाहिए तो सबसे पहली चीज है इसको डीलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो किसी और की वॉर की वजह से कोई और सफर करेगा. इसलिए डीलिंग करना और नॉन अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है. इज दैट वेरी क्लियर? आगे बढ़े. ठीक. तो थोड़ा सा लिखो और समझाती हूं अभी. स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव. स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव. स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव अभी और समझाऊंगी. इसमें लिखो, इट आर्ग्यूज that underdevelopment, it argues that underdevelopment is not natural. It is not natural, comma, it is due to historical and structural inequalities. Historical and structural inequalities in the global system. Full stop. Hence, development requires active state intervention
and structural changes, active state intervention and structural changes, not just free markets, not just free markets. Full stop. अब लिखो, emphasis was laid on, अब pointers में लिखेंगे, emphasis was laid on, according to this perspective, emphasis was laid on, पहला point, state-led industrialization. State-led industrialization. हमने PSUs प्रमोट किए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में. दैट वाज नथिंग बट स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया प्रमोटेड PSUs. इंडिया प्रमोटेड PSUs. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, reduce dependency on developed countries. Reduce dependency on developed countries. Remember Green Revolution to reduce the dependence on PL 480. पूरा आइडिया वही था, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, Green Revolution was launched. Green Revolution was launched to reduce dependence on PL 480. To reduce dependence on PL 480. Third, promote South-South cooperation. Promote South-South cooperation. BRICS. क्लियर है? या प्रमोटिंग इंडिया अफ्रीका रिलेशंस. तो रादर देन डिपेंडेंट ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, यू आर ट्राइंग टू फॉर्ज एन अलायंस विद अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज. तो प्रमोटिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन. और फोर्थ पॉइंट लिखो, ये सब स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव ही है. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. इंटरनल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. अब एक चीज रुकना, structuralist perspective is not an Indian perspective, but we have used the examples in context of India. Did you get the point? Perspective remains there, but when you add the example in context of India, now it is being applied in Indian context. So internal structural reforms इसमें लिखेंगे, development requires changes within the society. Development requires changes within the society. For example, land reforms. For example, land reforms, comma, education, skill, etc. Education, skill, etc. फुल स्टॉप. इसी में लिखेंगे, स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव्ड दैट विदाउट इंटरनल रिफॉर्म्स, structuralists believed that without internal reforms, growth will not be inclusive. Growth will not be inclusive. जैसे हम पावर्टी पढ़ रहे थे और हमने एक मॉडल करा था ना, केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, उड़ीसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, की जब तक वो इंटरनल चेंजेस नहीं आएंगे, ग्रोथ कैन नेवर बी इंक्लूसिव. इज दैट क्लियर? तो एग्जांपल लिख लो, केरला और उड़ीसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. केरला और उड़ीसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. अब इसमें डालो सोशियोलॉजिकल इंसाइट. स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव में डालो, सपोर्ट आर्ग्यूमेंट दे रही हूं. सोशियोलॉजिकल इंसाइट. A.G. Frank.
Andre Gundre Frank. A.G. Frank. A.G. Frank. Underdevelopment is created. Underdevelopment is created due to exploitative global capitalist system. Exploitative global capitalist system. और समीर अमीन का पर्सपेक्टिव, इसी का फॉलोअप पर्सपेक्टिव लिखो, समीर अमीन. समीर SAMIR, समीर अमीन AMIN. वैसे तो प्रॉपर नाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता. समीर अमीन, इसमें लिखो नीड फॉर डीलिंकिंग फ्रॉम ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम. Need for delinking from global capitalist system. अगर आपसे डेवलपमेंट पे सवाल आ जाए तो क्या आप ये पर्सपेक्टिव लिख सकते हो? अगर आ जाए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट थ्रू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. सो वन ऑफ द पर्सपेक्टिव कुड बी द स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव. इज दैट क्लियर? दूसरा लिखेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी. ये आप पढ़ चुके हो तो इसको मैं डिटेल में नहीं करा रही. डिपेंडेंसी थ्योरी.
आगे लिखते हैं, इसमें और कुछ नहीं लिखवा रही, आप लोग पढ़ चुके हो डिटेल में। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव आएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, नहीं रुको, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं, पहले एलटी हॉबहाउस का पर्सपेक्टिव लिखते हैं डेवलपमेंट पे। गिव द हेडिंग एलटी हॉब, ये भी आपने किया होगा, चलो अच्छा करो, एलटी हॉबहाउस व्यू, अच्छा हॉबहाउस ऑन सोशल डेवलपमेंट, एलटी हॉबहाउस ऑन सोशल डेवलपमेंट, एलटी हॉबहाउस ऑन सोशल डेवलपमेंट। Within that लिखो, a liberal sociologist who believed in development of society, a liberal sociologist who believed in development of society, not just in terms of wealth and technology, not just in terms of wealth and technology, but how society becomes more advanced, connected and free. Advanced, connected and free. Now just hold. हॉबहाउस कहते हैं, सबसे पहली बार उन्होंने ये बोला कि सोशल चेंज और सोशल डेवलपमेंट अलग कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा सोशल चेंज इज बेसिकली अ वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट एंड सोशल डेवलपमेंट इज अ वैल्यू लेडन कॉन्सेप्ट। एंड ही सेड कि सोशल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि वेल्थ आ गई या टेक्नोलॉजी आ गई, वो तब मानते हैं सोसाइटी टू बी डेवलप्ड व्हेन इट बिकम्स एडवांस, कनेक्टेड एंड फ्री। तो फिर उन्होंने कहा देयर आर 4 डायमेंशंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। पहला, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सोसाइटी। दूसरा, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द सोसाइटी। तीसरा उन्होंने कहा म्यूचुअलिटी एंड इंटर डिपेंडेंस। और फोर्थ उन्होंने कहा इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। उन्होंने कहा जब ये 4 चीजें होंगी देन वी विल से अ सोसाइटी हैज बिकम डेवलप्ड। इज दैट क्लियर? तो लिखो 4 dimensions of social development. 4 dimensions of social development. 4 dimensions of social development. First, increase in size. Simple examples लिखेंगे जिससे आपको समझ आए। Increase in size, for example, growth in metro cities. इंक्रीज इन साइज, ग्रोथ इन मेट्रो सिटीज। अब जैसे आपका मुंबई है, दिल्ली है, एनसीआर है, ग्रो हो रहा है ना, सो दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन साइज। सेकेंड लिखो इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी। नाउ जस्ट होल्ड, क्या मैं ये कह सकती हूं पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन देयर वाज इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी? It was not only the land under agriculture was increased, per hectare yield was also increased. So there was better optimum utilization of existing resources. That is nothing but increase in efficiency. तो इसी में लिखो, for example, mechanization of agriculture post green revolution. Mechanization of agriculture post green revolution. Third, mutuality and interdependence. Mutuality and interdependence. यहां पे पेपर 1 का कौन सा थिंकर लगेगा? वो 6 थिंकर्स में से डरकाइम का पर्सपेक्टिव, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। लिख लो। For example,
complex division of labor, leading to ऐसे बना लिया कर यार, स्पेशलाइजेशन, लीडिंग टू, इंप्लाइज का साइन लगा के स्पेशलाइजेशन लीडिंग टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. भाई कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर आया, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आया, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आई. क्यों? क्योंकि आपस में इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई. लास्ट, फोर्थ डायमेंशन, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी. इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इसमें वो टीएच मार्शल के राइट्स लगाते हैं, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स. थिंकर चाहिए हमको, डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, guaranteeing various rights such as civil rights, political rights and social rights. भाई ये तीनों राइट्स हमारे यहां भी तो है ही ना, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स. ब्रैकेट में टीएच मार्शल. अच्छा, अब याद करो, हॉब हाउस का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी करा है. प्री लिटरेट सोसाइटी, लिटरेट प्रोटो साइंस सोसाइटी, स्टेज ऑफ क्रिटिकल थॉट, नहीं किया है. अच्छा, तो मैंने अपने अटेम्प्ट में किया होगा. लिखो, नेक्स्ट लिखो, हॉब हाउस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. हॉब हाउस स्टेजेस of development of society. Hobhouse stages of development of society. चार स्टेजेस है. पहला लिखो, प्री लिटरेट सोसाइटी. प्री लिटरेट सोसाइटी, प्री लिटरेट सोसाइटी. वही KEE स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे. प्री लिटरेट सोसाइटी कीवर्ड हो गया, इसका मतलब होता है नो रिटन लैंग्वेज. प्री लिटरेट, कोई रिटन लैंग्वेज है ही नहीं, नो रिटन लैंग्वेज, कॉमा, पीपल आर लिविंग ओनली टू सर्वाइव. पीपल आर लिविंग ओनली टू सर्वाइव. कोई रिटन लैंग्वेज नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, कोई नॉलेज नहीं. दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन बेसिक सर्वाइवल. फॉर एग्जाम्पल, ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन फॉरेस्ट. ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन फॉरेस्ट. अब समझ आया? प्री लिटरेट सोसाइटी, कोई रिटन लैंग्वेज नहीं, द फोकस इज ओनली ऑन बेसिक सर्वाइवल, आइसोलेशन, टोटली निग्लेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द ट्राइबल सोसाइटी विच आर स्टिल लिविंग इन far-fetched forest. Next लिखो, next stage, literate proto-science society. Literate proto-science society. अब थोड़ी थोड़ी राइटिंग आने लग गई है. एक्सप्लेनेशन लिखेंगे. Start using writing and early reasoning. Start using writing and early reasoning. Start using writing and early reasoning. For example, early Vedic India. Early Vedic India. Third, stage of critical thought. यह आपका वो enlightenment period in Europe. Stage of critical thought. इसी में लिखेंगे, people begin to question. People begin to question traditions. People begin to question traditions and think rationally. And think rationally. People begin to question tradition and think rationally.
For example, Enlightenment period in Europe. Enlightenment period in Europe. And last, scientific thought, जो आज का टाइम है. Scientific thought. Use of science and evidence. Use of science and evidence to solve problems. Use of science and evidence to solve problems. For example, space exploration, modern medicine, etc. Space exploration, modern medicine, etc. अच्छा, एक चीज है, इसका आज ना रेलेवेंस आ सकता है. एक बार फिर से ये हॉब हाउस वाला पर्सपेक्टिव केवल पढ़ो. पहली लाइन से पढ़ो हॉब हाउस का पर्सपेक्टिव. हमने क्या लिखा था कि एक लिबरल सोशियोलॉजिस्ट है जो ये कह रहे हैं कि सोसाइटी का डेवलपमेंट शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ वेल्थ एंड टेक्नोलॉजी. इट शुड बी इक्वेटेड विथ व्हेन इट बिकम्स मोर फ्री, more connected and more advanced. So can I say in modern times we can further add to it in terms of equality, liberty and justice. जैसे कि अगर आज हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एमजी नरेगा लेकर आ रहे हैं, या लेट अस से हम आपको स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया लेकर आ रहे हैं. वी आर जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. या अगर हम सोशल स्फीयर में चेंजेस ला रहे हैं, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या हम आपको रिजर्वेशन राइट्स दे रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट इक्विटी इन द सोसाइटी, या हम पॉलिटिकल स्फेयर में लॉज को अमेंड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी. दैट इज ऑल्सो फर्दरिंग हॉब हाउस पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट. इज दैट क्लियर? तो इसी को ऐड करो अब. द एग्जिस्टिंग पर्सपेक्टिव ऑफ हॉब हाउस, the existing perspective of Hobhouse can be extended in today's modern time by adding justice, equality and inclusion. For example, creating jobs through MG Narega, creating jobs through MG Narega, comma, reservation for women in parliament, reservation for women in parliament, and policies promoting girl education. Policies promoting girl education. क्या आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल दिख रहा है? पहला वाला एग्जाम्पल इकोनॉमिक, सेकंड वाला पॉलिटिकल और तीसरा वाला सोशल. आप, मेरा कहने का मतलब है आप कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, बट वी कैन एक्सटेंड द पर्सपेक्टिव ऑफ हॉब हाउस इन टुडेज टाइम. तो अभी तक हमने कितने पर्सपेक्टिव करे? 3. एक स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव, डिपेंडेंसी थ्योरी, एंड ये था हॉब हाउस का पर्सपेक्टिव. अब बस एक छोटा पर्सपेक्टिव करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है? The term human development is coined by Mehboob ul Haq
However, it is popularized by Amartya Sen. According to this perspective, development is seeked by expanding the freedom and capabilities of individual. Hence, its focus is on A, developing या ensuring कर देते हैं, ensuring health, education, skill, and well-being of individuals, and second, treating humans as an end and not as a means to ensure economic growth. नेक्स्ट पर्सपेक्टिव, इसके बाद एक और पर्सपेक्टिव आएगा, वो आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट by human development, and finally it was sustainable development. So human development perspective says that the term human development was coined by Mehboob ul Haq, but it was promoted and popularized by Amartya Sen. And this perspective says that development is ensured by expanding the freedom, choice, capability of the individual. तो अगर आपको उनकी freedom, choice, capability पर focus करना है, that means your focus is on ensuring health, education, skill, and well-being of the individual. And finally, you will treat humans as an end and not as a means. इसमें इमैनुअल कांत भी आ जाता है, categorical imperative, that human should be treated as an end and not as a means to achieve economic growth. इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे, या कौन सा साल पढ़ रहा है, 2010, 2020, 2030, 2025 में भी बन सकता था, इसीलिए बना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इस पे बनता है सवाल. ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में लिखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन, इतना लिखा सबने, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट became more significant, the concept of human development became more significant in post-liberalized period. In post-liberalized period. In post-liberalized period, due to following reasons. Due to following reasons. First, denial of social justice. Denial of social justice. What I mean by this is, that is, economic growth has not been inclusive. Economic growth has not been inclusive in fact, the gap between haves and have-nots, the gap between haves and have-nots
has widened. Has widened. मैंने आपको पॉवर्टी और हंगर वाले लेक्चर्स में डेटा दिया था, ऑक्सफर्म की रिपोर्ट, that how 1% of the population is holding 40% of the wealth. I've also given you data with respect to stunting, wasting, है ना, हमने वो सारा डेटा किया है. Any data which you are comfortable or you remember can be added here. ठीक है, तो बस वहां पे लिख दो सपोर्ट विथ डेटा. हम डेटा ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करा रही. डिनायल ऑफ सोशल जस्टिस. सेकेंड रीजन लिखेंगे capability expansion. Capability expansion. Capability expansion. Within that, right? Globalization has created opportunities for growth. Globalization has created opportunities for growth through better access to education, better access to education, skill development, jobs, etc. Just hold. तो ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट हुई, तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? हम क्या पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट. और हम कह रहे हैं इस ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ी पोस्ट लिबरलाइजेशन. पहली इसलिए क्योंकि डिनायल ऑफ सोशल जस्टिस है, बट दूसरा पॉइंट तो फेवरेबल है कि कैपेबिलिटी एक्सपेंशन का स्कोप क्रिएट किया ग्लोबलाइजेशन ने. तो फिर हमें चिंता क्यों हुई? Uneven development. These opportunities were reaped only by the elite section of the society. इसलिए हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था बट दैट वाज नॉट इंक्लूसिव इन नेचर. इन फैक्ट द गैप्स बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स वर फर्दर गेटिंग widened. Is that clear? However, the opportunities were reaped by the elite section. However, the opportunities were reaped by the elite section, and the marginalization of the vulnerables compounded. And the marginalization of the vulnerables compounded. Marginalization of the vulnerables compounded. और बढ़ गया. क्लियर है? ठीक. अब इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो. रूरल अर्बन डिवाइड कर सकते हो, कास्ट क्लास डिवाइड कर सकते हो, जेंडर डिवाइड कर सकते हो, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर डिवाइड कर सकते हो. आपको जो डिवाइड लिखना है आप यहां पे लिख सकते हो. इज दैट क्लियर? अब तीसरा पॉइंट लिखो. challenges with respect to health and education. Challenges with respect to health and education. इसी में लिखेंगे despite rising GDP, universal health coverage remained a distant reality. Universal health coverage remained a distant reality. Remember out-of-pocket expenditure being high, responsible for 1/6 of India's poverty. ठीक है. Similarly, privatization of education and digital divides made education
a tool of reproducing inequality. Made education a tool of reproducing inequality. डेटा डाल दो असर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर. लर्निंग आउटकम्स हैव डिक्लाइंड पोस्ट कोविड, असर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, लर्निंग आउटकम्स हैव डिक्लाइंड पोस्ट कोविड. इनफैक्ट इस पे अमर्त्य सेन ने कहा था, एक बार किसी ने पूछा, इज मिक्स्ड इकोनॉमी अ प्रॉब्लम इन इंडिया? To which Amartya Sen said, mixed economy is not a problem. Problem is where India should have been private, they became public. And where it should have been public, it remained private. Health and education should have been public. We made it private. And industry should have been private. We made it public. तो उन्होंने कहा problem mixed economy में नहीं थी. Problem थी India's execution of mixed economy. तो लिख दो. अकॉर्डिंग टू अमर्त्य, स्टार बना के लिखना, ये अभी इसलिए लिखवा रही हूं, नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास में मिक्स्ड इकोनॉमी ही बात करेंगे. अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, द प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया वॉज, द प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया वॉज that it became public where it should have been private. It became public where it should have been private, and became private where it should have been public, and became private where it should have been public. इसीलिए अमर्त्य सेन ने कहा था कि अगर आपकी ग्रोथ है विदाउट इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन, इट इज ब्लाइंड डेवलपमेंट. बड़ी अच्छी लाइन है ये, लिखो इनवर्टेड कॉमर्स. अमर्त्य सेन की लाइन लिखो, ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टिंग, ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन, ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन is blind development, is blind development. और एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे. हमने कितने पॉइंट्स अभी तक लिखे? 3. तो चौथा लिखो, जॉबलेस ग्रोथ. पोस्ट लिबरलाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ थी. जॉबलेस ग्रोथ. In the current context, due to AI, automation, there will be increase in layoffs. फॉर एग्जाम्पल, हमने मैकेंजी की एक रिपोर्ट लिखी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू मैकेंजी, बाय 2030 12 million Indian women will lose job due to mechanization, due to mechanization. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो. What is human development approach? What is human development approach discuss in light of post liberalized period? Discuss in light of post liberalized period.
क्लियर है? ठीक है, इसी में एक और पर्सपेक्टिव है, AR देसाई को ऐड करना है, बट अब वो हम कल करेंगे, ठीक है? तो वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो, कल हम ये खत्म कर देंगे क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, एंड फिर एक टॉपिक रह जाएगा नेशन पॉलिटिक्स प्रेशर ग्रुप, वो परसों खत्म कर देंगे, ठीक है? और परसों मैं आपको पूरा सेक्शन सी एक बार समझा दूंगी कि इसको पढ़ना कैसे।